Welcome everyone. Now, in the last video, I explained cell division, genetics and absorption by roots. Now I'll explain transpiration and photosynthesis. Now, in the previous video, I forgot to tell you about the give reasons questions. These kind of questions will be there from the chapter absorption by roots. एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में रीजंस वाले क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं. इसके अंदर मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि यू हैव टू राइट द कीवर्ड लाइक हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक एक्सोस्मोसिस. व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ द सेल्स, व्हाई वी गार्गल विद सलाइन वाटर. क्यों हम सलाइन वाटर के साथ गार्गल करते हैं? क्योंकि सलाइन वाटर क्या है? हाइपरटोनिक है और बैक्टीरिया क्या है? हाइपरटोनिक है. तो क्या हो जाएगा? प्लाज्मोलाइज हो जाएंगे. क्या प्लाज्मोलाइज होगा? बैक्टीरियल सेल. ठीक है. सो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड प्लाज्मोलाइज. ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. सो गिव रीजंस एक बार आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा. नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, ट्रांसपिरेशन. इन ट्रांसपिरेशन, नाउ दिस टाइम गैनम स्पोटोमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. गैनम स्पोटोमीटर. गैनम स्पोटोमीटर मीन्स the diagram is drawn here. Now, according to the gannum spotometer, there is a capillary tube. This kind of diagram that the scale is drawn. I'm making a rough diagram here. This is a gannum photometer. Rough diagram I have made. Now, in this, the questions will be there. Now, in this question, first is why it is filled with the colored water. Then, what are the precautions? Precautions means we have to take a freshly cut twig. अगर बहुत देर का कटा हुआ ट्विग लोगे तो वो मर जाएगा, कोई ट्रांसपिरेशन होगा नहीं. तो हम क्यों लेते हैं? रिजर्वियर का फंक्शन क्या है? हम रिजर्वियर क्यों यूज करते हैं? टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट. कलर्ड बबल क्यों आना चाहिए? ताकि हम क्लियरली देख सकें द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. सो फोटोमीटर कर लीजिएगा. फोटोमीटर इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द चैप्टर ट्रांसपिरेशन. नाउ रेस्ट ऑल ट्रांसपिरेशन डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट. नाउ कम टू द again, stomata is also very important in the chapter transpiration. When the stomata is closed and when stomata opens. Stomata opens during day and stomata closes during night. Now, photosynthesis. In photosynthesis, now the main important thing is sometimes you have to draw the diagram. Oxygen is evolved during photosynthesis. Now, when you make the diagram, you do the mistake. क्या गलती करते हैं आप? Now, you see this test tube, the end of the test tube should be completely filled with water. Now, when you make the diagram, remember this thing, the twigs should not be more than 3. Otherwise, क्या हो जाएगा? Accumulate हो जाएगा गैस. So, twig का ध्यान रखेंगे. प्लस यहाँ पे टेस्ट ट्यूब का एंड जो है ये वाटर के साथ फिल होना चाहिए. कई बार आप क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर शो करना भूल जाते हैं. टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर होता ही नहीं है, फनल के अंदर वाटर होता ही नहीं है, तो ये वाटर शो करना है. नाउ टिल हियर, तो ये फिल होगा, वाटर फिल होगा, टेस्ट ट्यूब के यहां तक वाटर फिल होगा. क्लियर? नाउ अगेन सनलाइट इज इंपॉर्टेंट. Sunlight is important. So this diagram shows that oxygen is evolved during photosynthesis. When you make the diagram, keep it in your mind that this should be completely filled with water. Then hydrilla plant should not be more than 3, means the twigs, and the stem of the hydrilla plant should be towards the end of the funnel. आप ऐसे सीधे नहीं बनाएंगे, ऐसे सीधे नहीं रखते. हम उसका जो
ट्विग है उसको रखते हैं, क्योंकि नहीं तो एक्यूमुलेट हो जाता है. नाउ this can be asked to draw the diagram to show that oxygen is evolved during photosynthesis. Now light reaction and dark reaction mean है define photolysis of water. What is photolysis of water? Splitting of water molecules. Splitting of water molecules is photolysis of water. So photolysis of water, light reaction, dark reaction का difference. Light reaction takes place in grana and dark reaction takes place in stroma. Now again, you do the mistake, you get confused stroma और stoma में. Stomata अलग चीज है जो कि लीफ के अंदर होता है, और स्ट्रोमा जो कि फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन में होता है. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखने. अगर आप आर भी गलती से लिख देते हैं तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा. स्टोमेटा के अंदर स्टोमेटा और उसके अंदर हो जाएगा स्ट्रोमा. देयर इज अ डिफरेंस, grana and stroma, and here it is stomata. Stomata present in the leaves. Okay, this you have to keep it in your mind. This is all about the botany part. One more chapter is there, that is newly added, called plant hormones. In that chapter you will get again diagram based question. Phototropism, this type of diagram will be given. You have to identify and the functions of all the hormones, ethylene, auxin, and where these are, what is the function of all these hormones. These are important. So once you go through the chapter and go through the diagrams given in plant hormones, this is all about botany part. Now for rest of the chapters, you just watch my next video. Thank you.